Vivek, Reena, their arrogance is the same. Someone told me Congress party has said that how can Farooq Abdullah decide that Omar Abdullah will be the Chief Minister of Jammu and Kashmir? We may be a small party, but we are a partner. Farooq Abdullah should consult and take Rahul Gandhi's permission. 6 seats and they are talking like that. So there is a problem. Today, Rahul Gandhi is speaking on your behalf. He's speaking on top of Arvind Kejriwal. He's speaking on top of Akhilesh. He has created a hierarchy that he is the boss of the India Alliance and you are all reporting to him. And you saw what they've said in Jammu and Kashmir also now. Is that beneficial to anyone? Reena? See, Arnab, when we contested the Lok Sabha elections, there was a good Gathbandhan. सबने मिलके चुनाव लड़ा था और बढ़िया रिजल्ट रहा था. अब हरियाणा में कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, डिल्यूजनल हो गई, आई वुड से. तो जो हरियाणा का रिजल्ट है, आई वुड से कि हरियाणा का रिजल्ट एक तरीके से कांग्रेस जीत के हारी है. इतना जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी था. आई वॉज कैंपेनिंग इन हरियाणा और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के मिस गवर्नेंस के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी था. लेकिन जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ, जैसा कि राजस्थान में हुआ, वही हरियाणा में रिपीट हुआ. जीतते जीतते कांग्रेस चुनाव हार गई. आज हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि कितनी भी बड़ी पार्टी हो, घमंड नहीं करना चाहिए जी. हर चुनाव को पूरी मेहनत के साथ लड़ना चाहिए. हाँ. कांग्रेस को लड़ता है कि 4 दिन मोहब्बत की दुकान खोलिए, उसके बाद आप चले जाइए विदेश भ्रमण के लिए, वापस आइए तो आपको सत्ता मिल जाएगी. ऐसा पॉसिबल नहीं है. आपको 24/7 ग्राउंड पे रह के मेहनत करनी चाहिए थी. आम आदमी पार्टी चाहती थी कि हरियाणा में गठबंधन हो. पूरी कोशिश हमारी रही. हमें बताया गया था कि कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप भी चाहती थी, पर एंड में रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की क्या औकात है. और अब देखिए, अगर आम आदमी पार्टी के साथ या समाजवादी पार्टी के पास सबके साथ मिलकर लड़ा होता, सारे लीडर्स ने मिलकर कैंपेन किया होता, तो कुछ और अलग रिजल्ट होता. बट रीना जी उनको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा पार्टी को. रीना जी, कांग्रेस पॉलिसी इज वेरी क्लियर. I'm just coming to you, Sanju. These are very interesting comments. Congress party is very clear. They want your support in Delhi. They want Samajwadi party support in Kashmir, in Uttar Pradesh. They want Omar Abdullah support in Kashmir. And they want to join government with you and form state government with you. But when you say have alliance in Haryana, they say get lost. We have got Bhupinder Hooda. We have got Randeep Surjewala. We don't need you. These are and viewers, please remember, these are very, very serious comments being made when national spokesperson of Aam Aadmi Party says Congress party has become overconfident. Congress party has become delusional. Congress party is desperate to lose. 4 दिन मोहब्बत की दुकान करो, उसके बाद फॉरेन चले जाओ, फिर जाके इल्हान ओमर को मिलो, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को मिलो, एक हफ्ते वॉशिंगटन में बैठे रहो. What is this? So I think what is coming across is the image of Rahul Gandhi Sabio as a non-serious person, non-serious politician is back. And the serious political parties like Kejriwal, Akhilesh are saying, "Aise nahi chalega." You know, it's quite clear to me. I mean, just short comment before I go to the BJP. You agree with me on this? The sad part is that political parties like the Aam Aadmi Party and the Samajwadi Party think they need the Congress. They don't need the Congress. I believe the day they realize they don't need the Congress, their party fortunes will improve. Absolutely. I don't think Kejriwal needs Congress in Delhi. I absolutely don't think. I think Congress, Rahul Gandhi may need, Robert Vadra may need Akhilesh in Samajwadi Party. I don't think Akhilesh needs Congress in UP. Look at Goa, for example. There is no Congress in Goa. If they are surviving, nothing left. It's because of the Aam Aadmi Party. Correct. So I cannot understand what would an Aam Aadmi Party do working with the Congress when they should be growing themselves.